نہیں بالکل یہ آپ بھول جائیں کہ دیر ہو گئے یہ ہو گیا. ہم آپ کو پشاور میں بہت جلد ایک بہت بڑا عوامی اور وکلا کا ایک جلسہ کر کے دکھائیں گے. جب پٹھانوں نے, میں ہمیشہ پٹھانوں کو کہتا ہوں کہ موومنٹ میں جب میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا تو موومنٹ میں نے وہاں سے شروع کی, اور میں نے کہا تھا کہ جب پٹھان یلغار کرتا ہے تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا. السلام علیکم جی. آج آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا. اصل میں آج ہماری قومی ایکشن کمیٹی کی میٹنگ تھی وکلا کی, جس میں پاکستان بھر سے وکلا نمائندوں نے حصہ لیا, جس میں کہ ہمارے علی احمد قرش صاحب کو نے پریسائڈ کیا, اور اس میں راہب بلیدی صاحب جو کہ بار کونسل کو نمائندگی کرتے ہیں بلوچستان کی, وہ بھی موجود تھے, اور ہمارے پاکستان بار کونسل کے ممبر فرام پشاور جناب عبدالستار خان, اور ہمارے ممبر کے پی کے بار کونسل جناب علی زمان صاحب بھی موجود تھے. اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر ہمارے جمالی صاحب, حسیب جمالی صاحب موجود تھے. اس میں ہمارے پنجاب سے یعنی ہائی کورٹ بار, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب بابر مرزا صاحب, لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب عرفان باجوہ صاحب, اور متعدد علاقوں سے آئے ہوئے نمائندہ موجود تھے. اور ہم نے یہ ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جوائنٹلی آئندہ کے لیے موومنٹ چلانے کے لیے, جو کہ انشاءاللہ چھٹیوں کے فوراً بعد لانچ کی جائے گی جناب علی احمد قرش صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ سپٹمبر. اور یہ ریزولوشن جو پاس کیا ہے وہ اسی حوالے سے ہے, اور قرش صاحب اور انشاءاللہ تعالی نیشن وائڈ ہماری جو ہماری موومنٹ جو ہے اس کو لیڈ کریں گے. بہت بہت ریزولوشن اب پڑھی جائے گی. حسیب جمالی صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے, جو ریزولوشن ہم نے آج متفقہ طور پہ اڈاپٹ کی ہے. ادھر کر دو یہ والے جی. The Lawyers Action Committee in its meeting dated 18th July 2026 resolved as follows. Number 1. While the adverse fallout of the 26th and 27th Amendments continue to wreak havoc on the judicial system in Pakistan, the present process of selecting High Court judges is particularly horrific. The nomination of a High Court judge has now become like a nomination to the Senate, either bestowed as a reward for political loyalty or purchased through hard cash. When High Court judges obtain their seat not on competence or integrity, but on their ability to maneuver and intrigue their way through the different groups and political parties in the Judicial Commission, the future of justice in Pakistan is surely doomed. The interview process has been reduced to a mockery by making it in camera and excluding several JCP members from interview committee, allowing deliberately unqualified candidates to pass through with flying colors. We call upon all the JCP members still possessed of a conscience to refrain from indulging in this horse trading exercise and speaking out against these farts. This is the point number 1. The point number 2 is the committee expressed its deep concern and sorrow at the loss of many dozens of lives and worsening security situation in Balochistan, punctuated with daily terror attacks. The government and the military must realize this festering problem will not disappear merely because they have banned its coverage in the national press and electronic media. After 20 years wasted of following a clearly failed security strategy, it is high time
the military allows a genuinely elected leadership to come forward and take over the process of bringing peace to Balochistan. Point number 3. The committee notices that far from learning from its mistakes in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa, our establishment has doubled down on them and is now in process of repeating exactly same mistakes in Kashmir and Gilgit-Baltistan. This fascination with the creation of hard state has only alienated vast swaths of the populace in these regions, led to loss of lives and security, and bred long-lasting resentments that are being fully exploited by others. The committee calls for a fact-finding commission to be constituted from all 4 troubled regions to identify their issues and grievances and to hold public discourse regarding their solution. Point number 4. Similarly, the continued incarceration of advocate Iman Mazari and Hadi Chattha, and numerous political prisoners such as Imran Khan, Dr. Yasmin Rashid, Madam Maharang Baloch, and Shah Mahmood Qureshi, and Mr. Ali Wazir only serves to demonstrate a complete lack of ideas on how to deal with dissenting voices, and the silence and complicity of our judiciary, bar, and political parties in the face of blatant injustice. This state of affairs is entirely unsustainable and is leading our nation to an irreversible catastrophe which no amount of posturing on the world stage can disguise. Point number 5. The persistent attempts by the PCB, the Jarneli Tola, PCB, Jarneli Tola, and the provincial bar councils to obstruct and rig elections in bar associations where they fear unfavorable result are strongly condemned. All bar elections must without exception be held strictly on time as per law and with biometric and NADRA verification. Purported advocates with fake degrees or those holding alternate jobs must be removed from the rolls, and there should be complete ban on voting by a person holding dual membership of different bars. Number 6. The committee announces its support for the ongoing dharna at Babarlo in Sindh against the disappearance of Priya Kumari and other young children, and calls upon the government of Sindh to respect minority rights and their legitimate grievances. Sir, further आप बताएं. कुछ साहब बताएं. पेशावर का जो मोजिस साफ़ी आज़ाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और जैसे हामिद खान साहब ने कहा, हमें बहुत अफसोस है कि आपको हमारी वजह से, हमारी ताख़ीर की वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ा। हकीकतन आज बहुत अरसे के बाद एक बहुत ही मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड और तमाम पाकिस्तान से आए हुए नुमाइंदों, वकला नुमाइंदों के एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, और जिसमें हर हमारे साथियों ने अपने व्यूज़ का वो किया। मेरी ना चाहने के बावजूद और मेरे ना बार बार इनकार करने के बावजूद हामिद खान साहब और दूसरे साथियों ने मेरी ख्वाहिश के बिल्कुल बरखिलाफ़ मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 26-27 के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट है हमारी जो चल रही है, इसमें अभी ज़रूरत ये है कि मुनीर मलिक साहब ने इसको लीड किया, हामिद खान साहब ने लीड किया, अब ज़रूरत है कि अली अहमद खुद आगे आए। तो मैंने, ये सारे साथियों ने हमें हामिद खान साहब की सोच को जो है कंसेंट किया, ओके किया। तो मैंने वादे लेना ख्वास्ता इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया, और फिर उसके बाद मैंने कहा चूँकि अब मैं हूँ तो मेरे नज़दीक जो जिस आदमी के पास इख्तियारात हो, पावर हो, वो अगर अपने इख्तियारात और पावर इस्तेमाल करने का जिगर, दिल और हौसला नहीं रखता तो फिर वो इंसान नहीं।
नहीं, साफ ज़ाहिर है वकील हैं, कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस लिहाज से चूँकि अब वो ये मामला सिर्फ 26वीं 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ की मूवमेंट नहीं है, सारी हमारी अदालतों के से अवाम का एतमाद उठ गया है, सारे हमारे मुल्क में सियासी जमातों से लोगों का एतमाद उठ गया है, सारे अवाम का इस मुल्क में फ़ौज से एतमाद उठ गया है। इस वजह से अब सिर्फ और सिर्फ नज़र पाकिस्तान के अवाम की हमारे वकला के ऊपर है, और हम वकला ने ये फैसला किया है कि सिर्फ अभी हम बारूम में और कोर्ट प्रीमिसेस में वकला लायर्स मूवमेंट लायर्स कन्वेंशन नहीं करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है, मेरी तजवीज़ पर हमारे साथियों ने, कि हम इसमें आवाम की शिरकत के लिए पहले हमारा जो है हम पठानों के केस KPK में पेशावर में एक पब्लिक जलसे से पाकिस्तान के तमाम ये वकला, जिसमें 50 पाकिस्तान के नुमाइंदा वकला वहाँ मौजूद होंगे, हम वहाँ जाएंगे। पंजाब के अफगानिस्तान KPK के जो हमारे वकील हैं और अवाम हैं, उनसे हम खिताब करेंगे और इसके बाद इस मूवमेंट को सड़कों पे लाने का हम ऐलान करते हैं। हम सिर्फ पेशावर और कराची में या कोयटे में या लाहौर में पब्लिक जलसे से सिर्फ उस पर इक्तिफा नहीं करेंगे, बल्कि हमें कई दफ़ा बुलाया जाए कि लाहौर आप इस लंदन घूमने फिरने आए, मगर मैं नहीं गया हूँ। चूँकि अब मुझ पर जिम्मेदारी ली गई है, लिहाजा हम ये कहते हैं कि पेशावर के जलसे के बाद हम लंदन में पाकिस्तान के जो लाखों लोग वहाँ मौजूद हैं, उनके इन्विटेशन पर हम वहाँ जाकर ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की और 26वीं तरमीम के खिलाफ जो मूवमेंट है उसको वहाँ पे हम खिताब करेंगे, और इस तरीके से इस मुल्क की जो मूवमेंट है उसको आवाम में ले जाके आवाम की कबूलियत उसको अदा करेंगे। थैंक यू।